Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। थैंक यू सोनू। Retail inflation measured as CPI eases to 4.29% in April. Industrial production in March grows at 22.4%. At the stock markets, Sensex declines 471 points, Nifty slips 154 points, Rupee weakens 8 paisa against the dollar. And the United Nations revises global economic growth forecast upward to 5.4%. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में कम होकर 4.29% पर आ गई। औद्योगिक उत्पादन मार्च में 22.4% की दर से बढ़ा। शेयर बाजारों में सेंसेक्स 471 अंकों की गिरावट में रहा, निफ्टी 154 अंक के नुकसान में रहा, रुपए में डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट आई। और यूनाइटेड नेशंस ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान में संशोधन किया और इसे बढ़ाकर 5.4% कर दिया। इससे पहले कि हम आज की पहली खबर लें, हम आमंत्रित करना चाहेंगे कार्यक्रम में वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ श्री ए के भट्टाचार्य को, जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर भट्टाचार्य, नमस्कार। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अब लेते हैं आज की पहली खबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में कम होकर 4.29% पर आ गई। खाद्य मूल्य गिरने से अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। खाद्य वस्तुओं के बाजार मूल्यों में बढ़त की दर मार्च के 4.87% के मुकाबले कम होकर अप्रैल में 2.02% रही। खाद्य मूल्यों में मासिक आधार पर यह गिरावट प्रमुख रूप से सब्जियों के मूल्यों में 14.18% की गिरावट के बल पर आई। इसके अलावा मोटे अनाज और संबद्ध उत्पादों के मूल्य 2.96% कम हो गए। चीनी और कन्फेक्शनरी उत्पादों के मूल्य भी 5.99% कम हो गए, लेकिन तेल और संबद्ध उत्पादों के मूल्यों में 25.91% का तीव्र उछाल आया। मीट और मछली के मूल्य भी 16.68% की भारी बढ़त में रहे। अगर हम इन खबरों को ओवरऑल देखें, जो ये आंकड़े आए हैं मिस्टर भट्टाचार्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगभग 4.3% पर आ गया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत ही राहत होगी आरबीआई के लिए कि ये मिड पॉइंट पर आ गया है, उनका जो रेंज है उसमें? हाँ, आपने सही कहा है। दो चीज मैं देखता हूँ इसमें। एक तो ये है कि जो एक सीजनल डिक्लाइन जो है इन्फ्लेशन रेट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस जो रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, उसमें एक सीजनल डिक्लाइन आया है। जैसे हम जानते हैं कि ये जो बेंचमार्क जो है 2% नीचे का एक और 6% ऊपर का, उसके 6% पे काफी नीचे 4 में पहुंच गया है। तो मैं समझता हूं कि जो अगले महीने का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक जो होगी, उसमें ये एक आंकड़ा जो है, ये बहुत बड़ा एक मूल्यवान तथ्य उसके सामने रहेगा। क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई ग्रोथ की तरफ पुश देना है, तो इन्फ्लेशन रेट नीचे आना, 4% में आना, वो उनके लिए एक सहायक साबित हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सीजनल है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पिछली जो असेसमेंट इकोनॉमी की थी, उनमें उन्होंने ये एक असेसमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन रेट कम होगा, और उसी तरह हुआ है।
और अगली जो बैठक में होगी इसका एक हम आशा कर सकते हैं कि इससे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिव्यू में इसका एक रिफ्लेक्शन गाइडेंस में आ सके. And after the retail inflation figures, let's look at the industrial production figures. The country's factory output, measured in terms of the Index of Industrial Production, IIP, witnessed a 22.4% growth in March. Data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation showed today. The industrial output grew in March on the back of a lower base last year because of the nationwide lockdown imposed to curb the spread of COVID-19 infections. While mining output grew 6.1% in March, manufacturing zoomed 25.8%. Electricity generation also rose 22.5%. The growth in capital goods stood at whopping 41.8%. Consumer durables sector grew at 54.8%, and the infrastructure goods posted a growth of 31.2% in March. Hit by the pandemic and the restrictions, IIP contracted 8.6% during financial year 2020-21, as against 0.8% contraction in FY20. Mr. Bhattacharya, of course, IIP surged to over 22% for March. Of course, this is mainly due to the low base effect, but still some positive news. How do you view it? Well, as you pointed out, this is low base effect working out through these numbers. What we have to keep in mind is that for the full year 2021, for the second successive year, industrial growth has been in the negative zone, in the sense that there has been a contraction of industrial output in the economy for 2 consecutive years. Now, that is something that one has to look at. This March figure should also remind us that the impact of the general slowdown in the economy had begun to be reflected even before the lockdown actually got enforced. Please remember, the lockdown was enforced from March 23rd of 2020, yes. And this is a figure for the whole of March. So therefore, it is reasonable to assume that the 18% contraction that you saw in March 2020 and the 22% increase happened over that is clearly a sign that the Indian industrial economy, so to say, particularly the manufacturing sector and the construction sector, they have come out on a monthly basis, but I think it is a statistical effect. One has to see how this growth can be maintained, because April figure once again probably will come under the adverse impact of some staggered lockdowns across different states. So this is good news, but this has to be seen to what extent the adverse impact of the second wave will be contained in the coming months. You're talking about the adverse effect of the second wave, and as we just said, that this figure of 22.4% is due to a low base effect. Now, I mean, if I look at the, related to the rating agency Moody's rating, which came out yesterday, which has now cut India's growth forecast for 2022 to 9.3% from 13.7% earlier. And this is just a few days after S&P also lowered India's rating. And Moody's has also, assigned its lowest investment grade with negative outlook for India. So overall, what does it say for Indian economy and foreign investments? Well, the two are slightly delinked. My sense is that what you are seeing right now is in these different rating agencies forecast figures, not just the Moody's or the S&P or many other the various analyst agencies. They have all scaled down their forecasts from earlier robust figures of between 11 and 13% to less than 10%, ranging between some agencies have even forecast the growth in the current year, full year, would be 8.5% or so. But one has to acknowledge that this is a reaction to what is happening right now in the economy. The April, May, June quarter, the gains that we were expecting in the overall economic growth earlier
will probably will see a revision in its estimate, in the sense that for the full year, there certainly be an adverse impact on our growth by a percentage point or 2 percentage points, which means that the total size of the Indian economy will still not have reached the level that was reached at the end of March 2019. So that is something which is to be kept in mind, because while growth numbers can at times be very deceptive in these months and weeks of huge disruptions, you have to see the overall size of the economy, how on a standardized basis, whether they are expanding or whether they are still in a zone that is somewhat similar to what prevailed in 2019 end. मिस्टर भट्टाचार्य, अगर हम मूडीज के ही जो आए हैं आंकड़े उनकी बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रिबाउंड होगा मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में, और अगले वित्त वर्ष के लिए उन्होंने अपना जो अनुमान है वो बढ़ा दिया है, 6.2 से 7.9% कर दिया है. सो ये जो होपफुल फिगर्स आए हैं फ्यूचर के, उनको आपको लगता है कि फिस्कल और मॉनेटरी सपोर्ट की लगातार जरूरत रहेगी आरबीआई से, सरकार से? इवन तो हमने आईआईपी के फिगर्स बहुत अच्छे देखे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कैपिटल गुड्स, बट एज यू पॉइंटेड आउट की कॉन्ट्रैक्शन 2 साल लगातार हुई है. सो आपको लगता है कि अभी भी जो आरबीआई का और सरकार का जो मेन फोकस वो ग्रोथ ही रहेगा? आपने एकदम सही कहा है कि जो आपने जो उपभोक्ता सूचकांक का जो आपने जिक्र किया, वो अगर मॉडरेट रहेगा तो मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी फोकस रहेगी वो ग्रोथ में रहेगी. और अगर इसके साथ अगर आप सरकार, केंद्रीय सरकार की अगर एक फिस्कल पुश अगर साथ में आ जाए, मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है उसको कंट्रोल करने में काफी सुविधा होगी. तो ग्रोथ तो जैसे आपने कहा कि एकदम फोकस रहेगा, और इन्फ्लेशन रेट 4.2% होने के लिए मैं समझता हूं ग्रोथ में फोकस करना रिलेटिवली इस वक्त इजी होगा. और आपको लगता है कि अभी जो सेकेंड वेव है उसका जो इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो सीधे ग्रोथ पे आता है, प्रोडक्शन पे आता है, वो कम म्यूटेड होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर? इसकी आशा की जा सकती है? हालांकि बाकी फिगर्स जो पब्लिक हेल्थ के फिगर्स तो मच मोर सीरियस हैं. हाँ, एक असेसमेंट ये है कि ये जो लॉकडाउन इस बार हुआ है वो स्टैगर्ड लॉकडाउन हुआ है. तो क्योंकि ये एक साथ का लॉकडाउन नहीं हुआ है, तो अप्रैल, मई, जून का फिगर का जो प्रोडक्शन जो आएगा वो स्टैगर्ड की तरफ से इकोनॉमिक आउटपुट आएगी. जैसे हमने पिछले साल जो देखा था कि अप्रैल के महीने में पूरा भारतवर्ष में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप हो गई थी. मई के पूरी तरह ऑलमोस्ट एक हफ्ते छोड़कर पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हुआ था. बट इस बार जो हुआ है वो स्टैगर्ड हुआ है कि अप्रैल के महीने में हमने जो देखा है वो सिर्फ 6 स्टेट्स में लॉकडाउन हुआ था. मई के महीने में हमने वही 6 स्टेट को बढ़कर 13 स्टेट में आ गए हैं. अभी भी भारतवर्ष में अभी ऐसे 5-6 प्रदेश हैं जहां पे अभी भी लॉकडाउन शाम के कर्फ्यू और वीकेंड की कर्फ्यू के सिवाय और कोई लॉकडाउन नहीं है. तो हालांकि हमारी जो डिजीज की जो स्प्रेड जो है वो करीबन 700 डिस्ट्रिक्ट में 513 डिस्ट्रिक्ट में डिजीज में आ गई हैं, पर इकोनॉमिक लॉकडाउन जो हुई है वो स्टैगर्ड हुई है और उतनी भारी नहीं हुई है. तो मैं समझता हूं इम्पैक्ट तो जरूर होगा, पर वो इम्पैक्ट शायद पिछले साल की जो अप्रैल में जून की जो इम्पैक्ट हुई थी उसके साथ मिलाना शायद गलत होगा इस वक्त. आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का, फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे. शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1% की मंदी से 471 अंक कम होकर 48,691 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1% की ही मंदी से 154 अंक गिरकर 14,697 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.9% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई. At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange declined 471 points or
1% to close at 48,691 today. The Nifty at the National Stock Exchange slipped 154 points or 1% to 14,697. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index dropped 0.9% and the Small Cap Index fell 0.6%. Among sectoral indices, the Metal Index slumped 3.2%. The Basic Materials Index dropped 1.6%. The Bankex declined 1.4%. Oil and Gas Index and the Energy slipped 1.2% each. The Finance Index slid 1.1%. IT and Telecom Index fell 0.8%. Tech Index lost 0.7%. Healthcare Index dropped 0.6%. And the Consumer Durables Index fell 0.5%. The Auto Index was the only gainer, inching up 0.3%. Asian Paints has reported an 84.5% year-on-year rise in its consolidated net profit to 852 crore rupees for the fourth quarter of the last fiscal. Asian Paints consolidated revenue from operations jumped 43.5% year-on-year to 6,651 crore rupees. The company's board has also recommended a final dividend of 14.5 rupees per share for the last financial year. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे कमजोर हुआ और $1 की कीमत 73 रुपए 42 पैसे दर्ज हुई। सेंसेक्स में आज हमने लगातार दूसरे सत्र गिरावट देखी है और ये फिगर्स अभी आए हैं जो इन्फ्लेशन और आईआईपी के उत्साहजनक फिगर्स। आपको लगता है कि इनका हम असर कल बाजार में देखेंगे पॉजिटिव? देखिए, बाजार जो ये बात को पूरी तरह से समझता है कि ये जो फिगर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल ग्रोथ है, स्टैटिस्टिकल बेस से, लो बेस इफेक्ट से हुआ है। मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट होगा, पर मार्केट को ये भी समझ है कि ये जो ग्रोथ है वो बहुत ही मार्च का 2020 के 18% कंट्रैक्शन के ऊपर ये बेस आया है। पर जो आज का जो मार्केट का जो 470 पॉइंट की जो गिरावट आपने देखी है वो मैं समझता हूं कि वो काफी एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हुई है। पिछले 2-3 दिन हमने देखा है कि किस तरह से मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आई थी और उसी को देखते हुए मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि जो स्मार्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करके अपने खाते में पॉजिटिव इनकम दिखाया होगा। Moving on to the Asian markets. एशियन मार्केट से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी जो आपने रिजल्ट्स पढ़े उसके बारे में। काफी उत्साहजनक रिजल्ट्स आए हैं एशियन पेंट्स के। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 84.5% बढ़ा है। तो ये जो कंपनी रिजल्ट्स आ रहे हैं ये क्या हमें और कंपनियों के भी जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं ये हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं इकोनॉमी के बारे में? देखिए, जो एशियन पेंट्स का जो रिजल्ट जो आया है वो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर की ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे आप तो उसी के साथ ये मिला जुला दिखता है मुझे। अगर आप एशियन पेंट्स के रिजल्ट को देखेंगे उसमें आपकी जो प्रॉफिट जो ग्रोथ हुई है वो जो रेवेन्यू ग्रोथ से काफी ज्यादा हुई है। देखिए, आप जो एशियन पेंट्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 84% ग्रोथ हुआ है, पर उनका जो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ 43% ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनियां ज्यादा चीज नहीं बेच रही हैं पर उसी कम बेचने में भी उनका प्रॉफिट का मार्जिन काफी बढ़ गया है। यही ट्रेंड, मतलब जो कंपनियों की प्राइसिंग पावर बढ़ गई है और लो टर्नओवर में भी वो प्रॉफिट ज्यादा कर रही हैं, और यही चीज हम देख रहे हैं कि अभी तक जो 300 और 400 कंपनियों के रिजल्ट अभी तक जो चौथे तिमाही की जो रिजल्ट आई हैं उसमें भी हम यही देखते हैं कि हालांकि जो टॉप लाइन जो ग्रोथ जो है वो काफी नीचे है और पर बॉटम लाइन ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा है, उसका दुगना है करीबन, समझ लीजिए परसेंटेज वाइज। मिस्टर भट्टाचार्य, ब्रीफली आपको नहीं लगता कि जो कमोडिटीज में इतना जो बूम आ रहा है, उन कमोडिटीज की प्राइसेस इतनी बढ़ रही हैं, उससे बॉटम लाइन पे भी प्रेशर आएगा? देखिए, जो कमोडिटीज जो है वो जो हम देख रहे हैं कि प्रेशर तो जरूर आएगा, पर इस वक्त कंपनियों को पास ये प्राइस को एडिशनल प्राइस जो आ रहा है उसको पास ऑन करने की पावर आ गई है।
इसीलिए मैंने कहा कि प्राइसिंग पावर कंपनियों की बढ़ गई है। जो चीज पिछले साल नहीं थी वो चीज इस वक्त आई है कि उनके पास प्राइसिंग पावर आ गई है। वो अगर कमोडिटी प्राइस अगर इनपुट प्राइस बढ़ भी जाए उस प्राइस को वो कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं और हालांकि उनका सेल्स कम हो रहा है पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो रहा है बिकॉज दे आर एबल टू पास ऑन द हायर इनपुट प्राइसेस टू द कंज्यूमर्स। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डाल लेते हैं। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। जापान का निक्केई सूचकांक 1.6% की गिरावट में रहा। बाजार को समर्थन देने के लिए बैंक ऑफ जापान द्वारा आगे न आने के बीच निवेशकों ने बड़ी राशि बाजार में लगाना ठीक नहीं समझा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.8% की गिरावट पर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.5% की भारी गिरावट आई। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.6% की वृद्धि आई और हांगकांग का हैंगसेंग 0.8% बढ़कर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो इस वर्ष की सबसे तीव्र गिरावट के बाद आज शेयर बाजारों में स्थिरता थी। कंपनियों की आमदनी से जुड़ी रिपोर्टें मजबूत रहने और तीव्र आर्थिक सुधार के संकेत आने से मूल्यों में तीव्र वृद्धि से जुड़ी चिंताएं बेअसर हो गईं। दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.7% की बढ़त पर था। फ्रांस के कैक में 0.1% की वृद्धि थी और जर्मनी के डैक्स में 0.2% की बढ़त थी। आर्थिक खबरों में आधिकारिक आंकड़ों से पता लगा कि वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 1.5% की गिरावट आई। ये देखते हुए कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझने के लिए ब्रिटेन एक कड़े लॉकडाउन में था, अर्थव्यवस्था में सिकुड़न के ये आंकड़े तुलनात्मक रूप से कम हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने यह भी कहा कि मार्च में जब देश ने अपने कुछ प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू की तब अर्थव्यवस्था में 2.1% की वृद्धि हासिल करने में भी सफलता मिली। Moving on to the U.S. markets, U.S. stocks closed lower yesterday as rising commodity prices and labor shortages fed fears that despite reassurances from the U.S. Federal Reserve, near-term price spikes could translate into longer-term inflation. Economic data released yesterday from the Labor Department showed job openings at U.S. companies jumped to a record high in March, further evidence of the labor shortage hinted by Friday's disappointing employment report. The report suggests labor supply is not keeping up with surging demand as employers scramble to find qualified workers. That worker shortage, along with the supply drought in the face of booming demand, could contribute to what is seen as inevitable prices spikes, which the U.S. Federal Reserve has repeatedly said are unlikely to translate into long-term inflation. So the Dow Jones Industrial Average declined 474 points or 1.4% to close at 34,269. The S&P 500 slipped 36 points or 0.9% to end at 4,152. And the Nasdaq Composite dropped 12 points to 13,389. Mr. Bhattacharya, the Asian markets and the U.S. markets have been, the Indian indices have, of course, been reacting to the Asian and the U.S. markets. Today, of course, we saw Asian markets, there was a mixed reaction. But yesterday there was sluggishness. So there is also a concern that there is a likely rise in U.S. inflation, which could lead to interest rate hikes sooner than expected. Now, what does this mean exactly, and how is it likely to impact the Indian markets? Well, in my view, if the number one, the inflation fears that you're talking about are there, but these fears are slightly exaggerated because even though there is a reported labor shortage, but then the amount of money that has been pumped in the U.S. economy and the amount of money that has been going to be invested in the infrastructure sector, creating more jobs and therefore more pressure for on the labor supply situation. What I think this will result in is actually growth making a greater, faster progress than probably the kind of inflation fears that some people believe. Now, if inflation indeed goes up, then I think there will be a tendency on the part of the Fed to crack down on the interest rates, in a sense that interest rates may be raised. But a lot of experts believe that this inflation is not for the traditional reasons, cannot be attributed to traditional reasons for inflation. It is not a supply shock that has created the rise in inflation. So the answer to this problem of inflation does not necessarily lie
in raising of interest rates. On the contrary, to sort of tide over the current phase, by which time the supply shocks will be addressed and the inflation problem will be managed. So I do concede the point that the inflation fears can affect the markets in India, because if interest rates go up, then the money can flow out of India faster than it normally does. But at the same time, I do believe that the inflation fears are slightly exaggerated, and also the Fed's response to this temporary phenomenon of an inflation will not necessarily be responded to by an interest rate increase. All right. Moving on, the United Nations yesterday responded to the rebounding Chinese and U.S. economies by revising its global economic forecast upward to 5.4% growth for 2021. But it warned that surging COVID-19 cases and inadequate availability of vaccines in many countries threaten a broad-based recovery. In raising its projection of 4.7% growth, the UN's mid-2021 World Economic Situation and Prospects report pointed to the rapid vaccine rollout in a few large economies led by the US and China, and an increase in global trade in merchandise and manufactured goods that has already reached its pre-pandemic level. But the UN cautioned that this will unlikely be sufficient to lift the rest of the world's economies, and the economic outlook for the countries in South Asia, Sub-Saharan Africa, and Latin America and the Caribbean remains fragile and uncertain. Lead author Hamid Rashid, Chief of the Global Economic Monitoring Branch of the UN Department of Economic and Social Affairs, told a news conference that Europe's outlook is not as bright as we expected because of signs of second and third waves of COVID-19 infections. A very quick comment on the UN figures, the forecast that UN has given for global economic growth. I think the forecasts clearly show that the world economy will bounce back to a higher level of growth, and that is because the COVID crisis and the COVID challenges will have been tackled by then. There will be some new surges, but the vaccination program is being rolled out. So I do think that these forecasts are essentially a reflection of the general confidence in the managements of different governments in containing the adverse impact of COVID crisis on economy. आइए चले commodities की ओर. Global crude oil prices rose today on signs of a speedy economic recovery and upbeat forecast for energy demand supported by vaccinations against COVID-19, although waves of infections in India and Brazil curbed gains. So Brent crude futures climbed 34 cents to $68.89 a barrel. U.S. crude futures rose 39 cents to $65.67 a barrel. Meanwhile, the International Energy Agency said in its monthly report that demand for oil will exceed the output of top producers. Oil prices were also supported by the outlook from OPEC, which stuck to a forecast yesterday for a strong recovery in world oil demand in 2021, with growth in China and the United States outweighing the impact of the coronavirus crisis in India. उधर दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 229 रुपए कम होकर 47,074 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. चांदी का मूल्य भी 717 रुपए कम होकर 70,807 रुपए प्रति किलो हो गया. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मंदी के साथ $1,832 प्रति आउंस पर था और चांदी बिना किसी खास बदलाव के $27.38 प्रति आउंस पर थी. ब्रीफली मिस्टर भट्टाचार्य, ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट $69 पर बैरल, कॉज फॉर वरी? सर्टेनली चिंता का विषय है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रिटेल मार्केट में भी दाम बढ़ते रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है और ये इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए एक नया चिंता का विषय हो सकता है. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आज आप शामिल हुए मिस्टर भट्टाचार्य और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. नमस्कार. थैंक यू. जी, नमस्कार. And one last story before we go back to the headlines. India's fuel demand dropped 9.4% in April this year compared to the month of March as several states came under lockdown, official data showed today. Fuel consumption fell 9.4% to 17 million tons in April from 18.8 million tons in March. Data from Oil Ministry's Petroleum Planning and Analysis Cell showed
Sale of petrol fell to 2.4 million tons in April, 13% lower than March 2021, and demand for diesel declined to 6.7 million tons in April 2021, down 7.5% over the previous month. And before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation eases to 4.29% in April. Industrial production in March grows at 22.4%. Sensex declines 471 points. Nifty slips 154 points. Rupee weakens 8 paisa against the dollar. And United Nations revises global economic growth forecast upward to 5.4%. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.